हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जाना व्हाट आर द बेसिक लिंग्विस्टिक्स एंड व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स एंड देयर प्रिंसिपल्स, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स principles. Today we will learn about the speech organs of English language and phonemes. How many phonemes are there? Means how many sounds are there in English language. English language में कितने sounds हैं और उनका उच्चारण स्थान क्या है. Organs of speech, किन किन organs से हम sound create करते हैं English alphabets की. English vowel sounds, English consonant sounds, and their articulation, their place of articulation. Let's first discuss what is or what are the speech organs. See, I am talking or I am recording this lecture for you by the virtue of sound, because I know the sound of English phonemes. मैं आपको लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ साउंड. और ये साउंड जो है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की है, कुछ हिंदी अल्फ़ाबेट्स की हैं, तो उसको हम टेक्निकली फ़नीम बोलते हैं. और इन साउंड्स को जनरेट करने में कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं ह्यूमन बॉडी के. लेट्स डिस्कस अबाउट इट. So the various organs of mouth, especially our mouth, we use to produce speech sounds are called the organs of speech or speech organs. These speech organs can also be called as articulators. Technically, term has given it articulators. And further we will see the picture and discuss in detail about it. You can see in this picture the various organs of speech inside our face, mouth, neck, right from the upper part of the head towards downwards the neck. So place lips, and when we make its adjective, it turns into labial. Teeth means dental. Alveolar ridge, alveolar. Palate, palatal. Velum, velar. Uvelar, uvelar. Larynx, laryngeal. Glottis, glottal. So place are these and their adjective term is given you like this. You can see in the picture also nasal cavity where it is, alveolar ridge. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कंठ, तालु, जीभ, दंत, जिस तरह से हम हिंदी में पढ़ते हैं उसी तरह से see in English language also we have various organs of speech. We can pronounce, these are the terms given to these organs: palate, soft palate, velum, tongue, lower jaw, lips, thyroid, larynx. Further we will know about it in detail. So we have the upper part and the lower part of teeth. You can see in the picture also. And it produces so many consonant sounds. Organ of sound or speech we have here tongue. Tongue has so many parts like back, middle, front and tip. Each for these parts contributes towards making different sounds. So further you will got to know about these sounds. Alveolar ridge, it is the area between the upper front teeth and the hard palate. Means इसको हम हिंदी में तालु भी कहते हैं. आप इसको खुद से टच कर सकते हैं. You can feel it, practice it. Further we will learn which sound it produces.
Next is hard palate. You can see in the picture where is hard palate, a thin horizontal bony plate of the skull located in the roof of the mouth. Mouth के roof में उल्टी तरफ से this place lies. Check it and practically try to feel it. Next organ is soft palate or velum. The back portion, or you can say back portion of the alveolar or soft palate. It should have holes forming the function during speech to separate the oral cavity, mouth. So when we utter any sound, these creates the holes. जब हम velum, when we use the soft palate or velum, you know, it creates a hole while uttering a sound. जब हम इसके थ्रू जब हम कोई साउंड बोलते हैं तो इसके कारण क्या होता है, जो हमारा ये वेलम वाला पार्ट है वो इसमें होल हो जाता है, मतलब it turns a curve shape. You can see in the picture pharynx, where it is beside or beneath, along with the food pipe. The pharynx is like a tube beginning just above the larynx, you can see in the picture also, and ending two parts. So it also helps in creating sound. It is also speech organ. Next you can see uvula in the picture, where it is. It functions in the tandem with the back of the throat, the palate and air coming up from the lungs to create a number of guttural and other sounds. It may create so many sounds, and in many languages it closes to prevent air escaping through the nose when making some sounds. So it creates help while uttering sound. You can see here in the picture also. Last one we have here, glottis, means vocal cords, where the combination of vocal folds and space in the between the folds, मतलब गला जो है आपका, that is glottis, and it is also a speech organ, helps while uttering any phoneme or sound. So we learned about the various speech organs which helps while uttering the English phonemes or English sounds. Just like our mother tongue, we utter Hindi sounds. So we have the same mouth, but the language is different. So the place of articulation or the organs of speech plays different roles here for the different phoneme. Further, we're gonna discuss about the phonetics of English language. मतलब phonetic मतलब English भाषा के जो हम अक्षरों का ज्ञान लेने जा रहे हैं. The word phone means sound and tics means scientific or systematic study of something. So sound की scientific study, especially English sounds की scientific study हम next करेंगे. That is phonetics. Well students, आपको शायद यही पता होगा अभी तक कि वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स जो हैं इंग्लिश में 5 वाउल्स होते हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साउंड की. साउंड इज़ डिफरेंट एंड अल्फ़ाबेट्स आर डिफरेंट. उच्चारण की यहाँ पर बात हो रही है. सो व्हेनेवर समबडी आस्क यू हाउ मेनी phonimes are there in English language, alphabets are different, phonemes are different. Phonemes है उच्चारण, स्वर, और अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो है शब्द, सॉरी अक्षर. सो इंग्लिश लैंग्वेज में 44 फोनीम्स है. इनको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वाउल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स. वाउल्स साउंड्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज में वो 20 है. वाउल अल्फ़ाबेट्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो हमें पता है लाइक AEIOU, दैट्स the alphabets. These are vowel sounds, so these are 20 in total. और further vowel sounds को 2 पार्ट में आगे डिवाइड किया जाता है.
Monophthongs means one sound, diphthongs means two sounds. जब एक सिंगल वावल साउंड होती है तो उसको हम मोनोफ्थॉन्ग कहते हैं. जब डबल वावल साउंड्स को, दो वावल साउंड्स को मिलाकर एक साउंड बनती है तो उसको हम डिप्थॉन्ग्स बोलते हैं. मोनोफ्थॉन्ग्स 12 है एंड डिप्थॉन्ग्स आर 8. So there are 24 consonant sounds in English language. You should know about the monophthongs, diphthongs and triphthongs also. Triphthongs means three sounds, very rare. So let's have here vowel sounds basically of English language. चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की vowel sounds की, which are 20 in total and categorized in two category. Monophthongs means having one sound. For example, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ इसका, if I say sit, C-E, E sound is here having a single vowel sound. Sit, S-I-T, यहाँ पर एक vowel sound आ रही है E, sit. Then diphthongs, we have here 8 diphthongs. Diphthongs means having two sounds, two vowel sounds. For example, C. For example, say, a, say. Try, I, T-R-Y, try, I. आप इस वर्ड में देखेंगे जो आप इसको प्रोनाउंस करते हैं वहाँ पर टू साउंड्स होती है, टू वावल साउंड्स आ रही हैं. ट्राई, आई, ट, राई, आई. तो ये हो गया आपका डिप्थॉन्ग्स. सो now monophthongs has two types, short vowels and long vowels. Short vowel sounds are the 7 and long vowel sounds are 5. Short means sit. जब आप इसको pronounce करते हो तो short sound निकलती है, sit, e. And long vowels means जब आप इनको pronounce करते हो तो इसमें थोड़ी long sound निकलती है, उच्चारण के समय थोड़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे सी, ई, टू, pool. You drag the sound little bit longer. So these are the vowel sounds. You must learn it very well. अगर आपको vowel sounds का नहीं पता है तो आप English language अच्छे से नहीं समझ पाओगे. And if you have a good dictionary, Cambridge dictionary, advanced learner dictionary, you can see the pronunciation sounds of vowel sounds there of different words. आपको उस डिक्शनरी में आप देखोगे तो ये सारे साइंस मिल जाएंगे. जब किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन दी होगी तो वहाँ पे आप ये शॉर्ट वावल साउंड्स, ये लॉन्ग वावल साउंड्स, मोनोफ्थॉन्ग्स, डिप्थॉन्ग्स की आप वहाँ पर प्रेजेंस देख सकते हो. सो जब तक आपको इनकी नॉलेज नहीं होगी तो आप प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते किसी भी इंग्लिश वर्ड की. फर्दर वी हैव 24 कॉन्सोनेंट्स. हमारे पास इंग्लिश फनीम्स में, साउंड्स में 24 कॉन्सोनेंट्स हैं. P, B, you can see in the image also. P, B, T, D, K, G, F, B, Th, D, S, Z, Sh, Shaz, H. These all are the consonant sounds. P, pit. Now a difficult one is shaz, leisure. G sound, king. Ch sound. See the sound symbols here, how these are written. You can see these signs in your dictionary also. Whenever you want to pronounce, जब आप किसी वर्ड का मीनिंग देखते हो डिक्शनरी में, आपको वहाँ पर उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन दी गई होती है. तो these are the symbols of pronunciation. Joke, wet, weep, want. So कुछ ग साउंड देखो आप किस तरह से लिख सकते हैं. यू कैन सी हियर शज साउंड, हाउ यू कैन राइट द साउंड. दिस इज थीटा, दिस, देन, थिफ. So these are the basically consonant sounds of English language, and total these are 24.
One more thing, whenever you write the sound or you write the pronunciation, you write in the two bars here. You can see pen, the pronunciation of pen is given. पेन आप देख सकते हो यहाँ पर पेन की pronunciation साथ में दी गई है, इनको दो बार्स के बीच में लिखा जाता है. These are the sounds. कभी भी इंग्लिश की जो साउंड है pronunciation है उनको ये दो बार्स रिकोगनाइज या फिर रिप्रेजेंट करते हैं. विदाउट दिस बार देर इज़ नो प्रोनाउंसिएशन. तो यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए बीइंग इंग्लिश स्टूडेंट कि जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स को बताते हैं, साउंड के सिंबल्स को बताते हैं, तो हम इनको टू बार्स में लिखते हैं. जैसे यहाँ पर बिग को BIG साउंड, ये दिस इज साउंड. सी द सिंबल ऑफ थैंक्स, प्रोनाउंसिएशन ऑफ थैंक्स, थीटा, और किस तरह से ये लिखा है थैंक्स, टू बार्स में. अगर आप बार नहीं लगाते हो, ये स्लैश ये साइड वाला बार नहीं, दो बार के बीच में हम हमेशा साउंड प्रोनाउंसिएशन को लिखते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. सो इन टोटल यू कैन सी हियर consonant sound, vowel sound and diphthongs. Let's compare the two things, vowel sounds and consonants here. Vowels are basic speech sounds articulated with an open vocal tract. मतलब है इसका कि जब हम vowel sounds को अटर करते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, स्पेशली साउंड्स का, vowel sounds not alphabets, vowel sounds का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो हमारे ट्रैक्ट है, हमारा जो मुंह है वो मोस्टली खुला होता है. जैसे ई ऊ. लेकिन जब when we utter consonants are basic speech sounds articulated with a partially और completely closed vocal tract. जब हम consonant sounds का utterance करते हैं या उनको उच्चारित करते हैं तो हमारा मुंह मोस्टली क्लोज होता है. completely तो कई बार कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स में कम्प्लीटली क्लोज होता है और कई बार थोड़ा कम क्लोज. सो एक टेक्निकल एक जस्ट जनरल डिफरेंस हमें पता लग गया है. नेक्स्ट इज देयर आर 5 वाउल लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट. देयर आर 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट्स आर सेपरेट थिंग, ओके. लेकिन देयर आर अबाउट 20 वाउल साउंड्स इन इंग्लिश. साउंड्स 20 है, अल्फ़ाबेट 5 है. एंड कॉन्सोनेंट्स की अगर हम बात करें तो अल्फ़ाबेट में दीज आर 21 एंड अबाउट साउंड्स इफ यू टेल देन दीज आर 24. वाउल्स आर द न्यूक्लियस ऑफ अ syllable. Consonants have to be linked with a vowel to form a syllable. वाउल्स जो हैं वो सिंगल प्रेजेंस में भी कंप्लीट है. कॉन्सोनेंट्स को खुद की प्रेजेंस दिखाने के लिए वाउल्स के साथ लिंक्ड होने की ज़रूरत पड़ती है. यू कैन लर्न दिस चार्ट ऑल्सो. दिस विल हेल्प यू अलॉट. मेक दिस चार्ट, लर्न इट वेरी वेल. सी यहाँ पर वाउल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स को अलग अलग डिफाइन किया गया है. These symbols are very important and example is also given there. Learn it anyhow. मोनोफ्थॉन्ग्स दिए गए हैं. वाउल्स को हमने जाना है कि वी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मोनोफ्थॉन्ग्स एंड डिप्थॉन्ग्स in separate, light blocks are here representing monophthongs and dark blocks are here representing diphthongs. Further, you can see the consonants, and here also you can check here voiced consonant and unvoiced consonant. वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स आप देख सकते हैं इस टेबल में डार्क शो किए गए हैं, जिसका उच्चारण करते समय हमारी जो आवाज़ है वो ज़्यादा ज़ोर से निकलती है, जैसे बोट. लेकिन अगर आप पी बोलते हो या टी बोलते हो तो साउंड जो है वो कम निकलती है. सो दीज आर अनवॉइस्ड. तो कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो दो तरह की कैटेगरीज में आती है, वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड. वॉइस्ड मतलब जिनका उच्चारण करते समय आवाज़ बहुत तेज़ी से बहुत ऊंचा उच्चारण होता है जिनका. अनवॉइस्ड जिनका धीमा उच्चारण होता है. शेल, कार, हैट, फ्लाई, थिन, थिंक, दीज आर वॉइस्ड. अनवॉइस्ड मतलब इनके उच्चारण में आवाज़ बहुत कम आती है, आवाज़ नहीं आती है ऑलमोस्ट.
और वॉइस जो है गो, टेलीविजन, वैट, यस, सिंग। ये जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और भी आपको टेबल बना के एटलीस्ट मेक टेबल, आप इसका टेबल बनाइए, सेम टेबल बनाइए। लेकिन आपको एक होमवर्क है, आप जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हो इसके अलावा आपको 5 एग्जाम्पल्स मोर आपको खुद से लिखने हैं। यू हैव टू राइट 5 मोर एग्जाम्पल्स बाय योरसेल्फ। एंड जिस तरह से यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड्स को या वाउल साउंड्स को अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन देयर ऑल्सो। आई वॉन्ट दिस इन योर होमवर्क or in your assignment or notebook sheet. Now further in consonant sounds we further divide it into further parts. For example, on the basis of place of articulation, मतलब हम कॉन्सोनेंट्स को और तरह से भी जान सकते हैं कि कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स की जो है वो जो आवाज़ निकल रही है कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स की, कॉन्सोनेंट साउंड जो है आपकी, उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ से लोकेट हो रही है, मतलब वो आवाज़ कहाँ से उच्चारित हो रही है। सो इसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। द लोकेशन ऑफ वेयर द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड इज नोन एज और इज कॉल्ड एज articulation. So there are 8 places of articulation, and let's have in detail. You can see here, first we have here bilabial. Bilabial, the sounds are produced when the lips are brought together. जब हम अपने lips को together brought करते हैं, for example p, जब आप try to imitate like me, p, जब आप प कॉन्सोनेंट साउंड को अटर करते हैं, प, ब, म, ये तीनों साउंड्स जो है ये बाइलेबियल है। जब इनका उच्चारण आप करते हैं, वेन एवर यू अटर दी साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, योर लिप्स, योर बोथ अपर एंड लोअर लिप्स विल कम क्लोजर। प, ब, म। नेक्स्ट इज लेबियोडेंटल, फ्रिकेटिव्स, फ एंड व। लोअर लिप इज इन कॉन्टेक्ट विद द अपर टीथ। जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो हमारा जो लोअर लिप है वो अपर टीथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि टच होता है। द फ्रिकेटिव वॉइस इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बेयरली ऑडिबल। ये इतनी तीखी आवाज़ नहीं होती है और कई बार तो ये सुनती भी बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल फ, व, फैन, वैन, हाफ, हाव। Next is labiodental. Next is dental fricatives. The tongue is normally placed behind the teeth, with the tip touching the inside of the lower front teeth and the blade touching the inside of upper teeth. The air escapes through the gaps between the tongue and the teeth. Example of the word thumb. Here you can see जो टंग है वो नॉर्मली कहाँ पर टीथ के पीछे टच करती है। You can utter here words. आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो साउंड है थम, थ, थ साउंड को हम थीटा की तरह लिखते हैं। You can see here थम, either, father, breathe, thus। जब ये हम वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं, वेन एवर वी आर प्रोनाउंसिंग दीज वर्ड्स, आर टीथ, टिप ऑफ द टीथ इज टचिंग टूवर्ड्स द बैक ऑफ द टीथ। जो हमारी टंग है वो हमारी टीथ के बैक साइड पे टच हो रही है। सो दीज आर डेंटल फ्रिकेटिव्स। यू कैन कंपेयर द बोथ लेबियोडेंटल एंड डेंटल फ्रिकेटिव्स। यू कैन राइट डाउन 5 more words having labiodental and dental fricative sounds. Next consonant sound is alveolar. Alveolar sounds are made by raising the tip of the tongue towards the ridge that is right behind the upper front teeth, called the alveolar ridge. Examples, इस तरह की जो साउंड अटर होती है आप देखते हैं ट, द, न, श, ज। ये जो साउंड है रे, र, ल, ये जो साउंड्स हैं ये
जब हम अपने टंग की जो टिप है उसको तालू की तरफ को, रिज की तरफ को टर्न करते हैं, अपर टीथ के पीछे जो वाला एरिया है दैट इज़ रिज, वहाँ पर टच करते हैं तो ये एल्विलियर साउंड्स क्रिएट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल रिटर्न, सडन, मेसी, lousy, no, relief. So try to utter these sounds and find out more 5 words further. Now after alveolar sound, we have here post-alveolar sound. The tip and the blade of the tongue articulate with the back part of the alveolar ridge, teeth ridge. जो मीन्स alveolar से भी पीछे वाला जो पार्ट जब टंग टच करती है, this sound is produced. Ra. You can only one sound is it. जब हम र साउंड को अटर करते हैं, सिर्फ एक साउंड है र, जिसे हम पोस्ट एल्वेलियर साउंड भी बोलते हैं, या पोस्ट एल्वेलियर के थ्रू ये क्रिएट होती है र. ऑलमोस्ट र साउंड को इंग्लिश में साइलेंट ही माना जाता है. So soft palate is raised and consonant is oral. Try to utter so many words having raw sound. Next we have here plateau alveolar. The tip and the blade of the tongue articulate with the alveolar ridge and the body of the tongue moves in the direction of the hard palate. The English plateau alveolar consonants are oral. These are oral. For example, you can see here t, ch, j. जब आप अपनी टिप से church, church, you try to pronounce these words. इसको pronounce करने, इनका उच्चारण करने की कोशिश करिए. Then you will get the real sense. Plateau alveolar. जब आप अपनी टंग का ब्लेड है, द टिप और जो आपकी जो ऊपर का स्मूथ एरिया है टंग का, उसके थ्रू इसको जब रिज को, एल्वेलियर रिज को टच करते हैं तो ये साउंड क्रिएट होती है चर्च, जज, शश, measure. Sound here we have palatal. Next place of articulation, उच्चारण स्थान जो है हमारे पास वो है palatal. Palatal sounds are very similar to plateau alveolar sounds. They are just produced further back towards the velum. Velum की तरफ जब हम टर्न करते हैं टंग को तो वहाँ पर फिर palatal sounds produce होती है. इंग्लिश में सिर्फ एक ही palatal sound है, that is y. Onion, yes, yellow, beauty, new. और ये वॉइस्ड है, मतलब इसमें आवाज़ आती है इसके उच्चारण करते समय. अनियन, य. See how these are written. Next is velar, place of articulation. Velar sounds are made by raising the back of the tongue towards the soft palate called the velum. जो हमारी टंग की बैक साइड है, जब भी सॉफ्ट पैलेट की तरफ टर्न होती है, इसे then it is called velum. For example, k, g and g. Locker, gun, singer, ing, singer. So whenever we pronounce these or utter these sounds, we mold around the lip. Nga, gun, locker. Try to imitate and learn yourself. The last sound or place of articulation here we have glottal or glottis. Glottal sounds are produced when the air passes through the glottis as it is narrowed. जब हम गले को नैरो करते हैं थोड़ा और कोई साउंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की अटर करते हैं, only one consonant sound is uttered through glottis, that which is her, hi, him, he,
So these are the example here. So these 9 were the place of articulation, consonant sounds. ये जो 9 आपको अभी मैंने place of articulations बताए हैं, these are about the place of articulation. हमारी जो उच्चारण है consonant sounds का, वो कहाँ से उच्चारण होता है. Learn it very well. To conclude, we can see here the table and the picture here from where the various consonant sounds rests and utter, means places of articulation of the consonant sounds. Next we have here manner of articulation, consonant sounds. Manner of articulation refers to how the air stream from the lungs is directed to the mouth and modified by the various structures to produce a consonant phoneme. So यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैनर में कि किस तरह से जो एयर है, एयर स्ट्रीम है, हमारी लंग से होते हुए हमारी मुंह तक पहुंचती है और किस तरह से वो कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट फनीम को अटर करती है, यानी कि उच्चारण करती है फनीम साउंड का. सो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन हियर ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स. फर्स्ट वी हैव हियर प्लोसिव और ओरल स्टॉप. मतलब जब हम इनको ग्लाइड करते हैं, जब एयर लंग्स से होते हुए माउथ तक पहुंचती है, तो ओरल स्टॉप मतलब कि आवाज़ इसकी काफ़ी आवाज़ इसकी होती है. नेज़ल स्टॉप, इसकी मुंह से आवाज़ आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सच एज प, ब, ट, ड, क, ग. नेक्स्ट इज नेज़ल. नेज़ल मीन्स जब नाक से हमारी आवाज़ आती है, जिन कॉन्सोनेंट्स को अटर करते हुए नेज़ल से स्टॉप, नेज़ल पे स्टॉप होती है जो एयर है, प्रोड्यूस्ड बाय रिलीज ऑफ द एयर थ्रू द नेज़ल कैविटी, सच एज म, न, ग, मैन, noun, king. Example, fricatives, produced by the release of a friction noise created by the air stream escaping through a virent or narrow gaps in the mouth, such as f, v, th, sh, z, sh, h. ये सारी साउंड्स हैं, ये माउथ में गैप फ्रिक्शन के साथ अटर होती है. इसमें जो साउंड है वो थोड़ी कम अटर होती है. ऑलमोस्ट ये जो है वो बहुत कम साउंड क्रिएट करते हैं. एयर जो है वो धीरे से साउंड क्रिएट करती है. नेक्स्ट इज लेटरल अप्रॉक्सीमेंट, प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन of the air stream at a point along the center of the oral tract with complete closure between one or both sides of the tongue and the roof of the tongue, both sides of the tongue and the roof of the tongue, top of the tongue, such as l. Next is central approximant semivowel, which are v, r and y. Affricatives, fricative, affricatives, plosive are important here. Produced by involving, affricative are those produced by involving more than one of those manners of articulation. Firstly, produce the sounds in the alveolar ridge, then followed by combined with fricative sounds, जो कि fricative sounds की हेल्प से बोले जाते हैं, such as t, j, ch sound. So affricative sounds are ch and j. So let's have here the table of consonant sounds or classification of English consonants. Watch it very carefully. See here, place, arrow is given. Manner, downwards. Place of consonant articulation is bilabial, labial, labiodental, dental, alveolar, post-alveolar, palato-alveolar, palatal, velar, and last one is glottis.
It is not visible, but it is glottis. Then manner downwards, plosive, affricative, fricative, nasal, lateral, consonant, semivowels. And you can see VL, VD. VL means voiceless, VD means voiced, जिसमें आवाज़ आती है और जिसमें आवाज़ नहीं आती है. For example, P. P is bilabial and both lips are use a P. And plosive, it is plosive, and along with it, it is voiced. इसमें it is voiceless. P. बहुत कम आवाज़ आती है. B. B is quite voiced sound. So you can learn like this. H is the only glottis sound. It is fricative. So today we completed this basic linguistics topic from Unit 1. Here, assignment question for you all. What are the speech organs? Describes vowel and consonant sounds of English language IPS system. What are the manner and place of articulation of various consonants of English language? Learn it, revise it, and being a teacher you should know about these all, vowel and consonant sounds, means phonemes of English language.